अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप लोगों के? आप लोग ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि पिछले लेसन में काफ़ी कुछ आप लोगों ने खुद से पढ़ लिया होगा और आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या-क्या पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस क्या होती है और किस तरह की ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस होती है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस बेसिकली दो तरह की है। एक को हम कहते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस और दूसरी होती है जी बाई सेलुलर ऑर्गेनेल। दूसरी होती है द हेल्प ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनेलीज, जिसमें एक माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस आ जाती है और दूसरी क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस आ जाती है। मैटरनल इनहेरिटेंस, some traits expressed in offsprings not because of their genes but because of the mother, which can be short-lived or persist throughout the lifespan of the individual. कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो कि इंडिविजुअल की जीन्स के ऊपर तो बेस नहीं करते, उसकी जीनोम का पार्ट तो नहीं होते, लेकिन बिकॉज ऑफ द मदर की वजह से वो फीचर्स आते हैं। या तो ये फीचर्स शॉर्ट लिव्ड होते हैं या फिर ये थ्रू आउट द लाइफ स्पैन परसिस्ट करते हैं। मैटरनल फैक्टर्स कुड बी द जीन प्रोडक्ट्स। अब ये मैटरनल इनहेरिटेंस क्यों आती है जबकि वो जीनोम का पार्ट ही नहीं है? ये आ सकती है कि बिफोर कि जब एग अभी था तो उस वक्त कुछ जीन के प्रोडक्ट्स जो थे वो मदर की जीनोम में रहे, मदर के सेलुलर कंटेंट में रहे। कुछ प्रोडक्ट्स थे ऐसे थे जो मदर के इसमें एग सेल्स के अंदर थे, और वही आफ्टर द डिवीजन ऑफ द सेल फ्रॉम जब जाइगोट बना और सेल्स की डिवीजन हुई तो वो फैक्टर्स जो मदर की एग के अंदर प्रेजेंट थे वो साथ साथ चलते रहे। मैटरनल फैक्टर्स कुड बी द जीन प्रोडक्ट लाइक द एमआरएनएज ऑफ द मैटरनल जीन। मैटरनल जीन के कुछ एमआरएनए के प्रोडक्ट्स थे जो कि वो साथ साथ चलते रहे। These products produce their effect at the early cleavages or blastulation stage when there is no transcription। जब और ये उस वक्त अपना प्रोडक्ट इफेक्ट शो करना शुरू कर देते हैं जब ट्रांसक्रिप्शन अभी सेलुलर कंटेंट में हो नहीं रही, क्योंकि सेल्स जो हैं वो भी डिवीजन फेज में है। यू पीपल नो कि जब सेल्स डिवीजन फेज में होते हैं तो क्रोमोसोम्स कम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं और कम्पैक्ट फॉर्म उनकी इनएक्टिव फॉर्म है। तो उस वक्त अगर उनको कुछ प्रोडक्ट उनकी हेल्प कर रहे हैं, कुछ एमआरएनएज वहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो मैटरनल एमआरएनए होगा। Maternal mRNAs are maternal inheritance is observed in like for example shell coiling in the lemony in snails. The shell is spirally coiled. In most cases, shells are coiled clockwise. In most of the cases, the coiling of the shells you can see the clockwise. Say for example, you can see in the diagram. The clockwise coiling is called the dextral coiling. In some cases, it's counterclockwise, called the sinistral coiling. Coiling is because of the dextral or sinistral cleavages, which is under genetic control. ये coiling जो हो रही है ये because of the genetic control बनती है कि इसकी dextral cleavage हो रही है या sinistral cleavage हो रही है। इसकी clockwise cleavage चल रही है या anti clockwise cleavage चल रही है। Sinistral is appeared as mutation in normal dextral population. Sinistral cleavage sinistral features are controlled by the allele S, which is recessive homozygous, Sinistral 1 controlled by the allele S, which is recessive homozygous SS. When crossed with the S plus and the S plus, progeny will be um, progeny will be progeny was sinistral. You people know that S plus is the homozygous. S plus is the dominant. S plus is the dominant trait. S plus is the dominant. When it is crossed with the SS, it must be dextral, but it is but we see that this individual is sinistral.
just a moment. We crossed, so for example, S, we cross SS with the S plus, it is producing S, it is producing S plus. By the fusion of these gametes, S plus S is produced. We know S plus is dominant over S. So the individual must be the dextral, but we are seeing here that this individual is not the dextral, this is sinestral. This individual is sinestral. What is happening behind this? So genes for the dextral do not show them. Why they are not showing them when F1 and F1 all individually will be dextral? Uh, because the genotype is being determined by the genotype of the mother. Why okay, I'm explaining. यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि एस एस जब क्रॉस किया हमने एस प्लस के साथ तो हमें जो प्रोजनी मिलती है वो एस की मिलती है एस प्लस इज डोमिनेंट ओवर एस तो इसको डेक्स्ट्रल होना चाहिए था ठीक है because say for example the father was the dextral and the mother was the sinestral so mother is contributing so because of the contribution of the mother यहाँ पर डेक्स्ट्रल प्रोजनी जनरेट नहीं होती यहाँ पे मेटरनल इफेक्ट की वजह से सेनिस्ट्रल प्रोजनी जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है so the all the F1 heterozygous S plus S because the genotype of the mother determines the phenotype of the offspring so all the offsprings all the F1 have a sinestral shell तो जितने भी थे वो सारे के सारे sinestral shells जो हैं उसमें प्रोड्यूस हुए Next example is by the cellular organelles chloroplast inheritance in variegated 4 o'clock Mirabilis lapa plants. Um, this plant contains the three types of leaves and the parts. Full green branches having chloroplast, white leaves and branches with chloroplast. Variegated branches having leucoplast in white areas and chloroplast in green branches. In green branches, green plants perform photosynthesis, white parts do not, so depend on the green parts. Okay, there are three types of the leaves and the parts. एक तो वो हैं जिनके पास फुल ग्रीन है इनके पास क्लोरोप्लास्ट है वाइट ग्रीन है इनके पास ल्यूकोप्लास्ट है फिर वेरीगेटेड ब्रांचेस हैं जिनके पास ल्यूकोप्लास्ट वाइट एरियाज है और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन एरियाज है green platform is for the photosynthesis और जो white part है वो photosynthesis perform नहीं कर सकता it is dependent on the green part plants from the white part will die because they do not contain the chlorophyll to synthesize food variegated will give the mixed progeny green white and variegated मैंने आपसे ये कहा कि इट कंटेन्स थ्री टाइप्स ऑफ द लीव तीन तरह के लीव्स हैं एक फुल ग्रीन है जिनमें क्लोरोप्लास्ट है वाइट लीव्स हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है ल्यूकोप्लास्ट है वेरीगेटेड ब्रांचेस हैं जो मिक्स्ड हैं जिनमें दोनों प्रेजेंट हैं ग्रीन एरिया में क्लोरोप्लास्ट और वाइट एरिया में ल्यूकोप्लास्ट ग्रीन जो पार्ट है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर द फोटोसिंथेसिस वाइट पार्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड नहीं कर पाता तो
you are seeing that you can see, so uh, you can see that this uh, green and white parts of the plants are not dependent upon the genotype of the plant. These are dependent upon the chloroplast. कि जिस पार्ट में क्लोरोप्लास्ट है वो तो ग्रीन हो रहा है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है वो वाइट पार्ट आ रहा है, और वही जिसमें क्लोरोप्लास्ट आएगा वो अपनी फूड भी तैयार कर सकेगा और वो सरवाइव करेगा, और जिसमें नहीं आ रहा वो उसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो दिस इज बिकॉज ऑफ अब क्वेश्चन ये रेज होता है, कुछ लीव्स वेरीगेटेड हैं जिनमें मिक्स प्रोजेनी है, तो जिन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट जा रहा है वो ग्रीन है, जिन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं जा रहा वो वाइट आ रहे हैं। सो दिस इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द जीनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दिस इज एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन द, yes of course, this is actually dependent upon the chloroplast present in the organism. Then by the mitochondria, inheritance आती है by the mitochondria peptide in the yeast. The peptide mutants fails to grow on carbon source and remain small. This issue arises when yeast are in oxygen-containing environment, so its defect on respiratory aerobic mechanism. The peptide mutant can be segregated on the genes which can follow Mendelian genetics ratios. Can be non-segregational, vegetative. This is the extra chromosomal. तो ये जो ऑक्सीजन कंटेनिंग एनवायरनमेंट में डेफिशिएंसी आ जाती है और वो ग्रो नहीं कर पाते, ये दो तरह से इनमें प्रॉब्लम्स आते हैं। एक तो वो है कि जो सेग्रीगेशन जिनमें हो जाती है, जिनमें जो सेग्रीगेशन प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, मेंडेलियन जेनेटिक रेशियो उसमें आती है, ये तो जेनेटिक होगा। लेकिन जो पार्ट लेकिन अगर वो मेंडेलियन जेनेटिक रेशियो फॉलो नहीं करते, सेग्रीगेशन प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका मतलब ये है कि दीज आर नॉट प्रेजेंट इन द जीनोम, these are present in the in somewhere else extra chromosomal region. Pocky strains of the Neurospora and Neurospora crassa, there are many mitochondrial mutations. Pocky strains differ in several aspects. They may have a slow growing, they may have slow, they may be the slow growing organism, show maternal inheritance and have abnormal cytochrome. In such kind of strain, because why they are slow growing, because they have some abnormalities in the cytochrome, which is the part of the mitochondria. Male sterility in the plant is controlled by the nuclear genes or plasma genes. Uh, Plasma genes, which are means to some extent the part of the cytoplasm may take part in the male sterility of the plants. Cytoplasmic male sterility in males and the some other plants in male and some other plants. In males and some other plants, male sterility is controlled by the cytoplasm. If the female parent contains the sterile genes, if the female parent contains the sterile genes, F1 progeny will also be sterile. F1 progeny will be sterile because mother is sterile. Mother contains defective cytoplasm. Because of the defective cytoplasm of the mother, the male become also sterile. So this is all about the extra chromosomal genetics in the organism, extra chromosomal inheritance of the organism. I hope it will be enough for all of you, and I hope it will cover your requirement. Thank you all for giving some time to this, for giving some time to this lecture. Good luck. Allah Hafiz.